Okay, so hi everyone. Just a second. Hi Jane. Hi. Hello. So I'll quickly give them a little bit of introduction what we are going to learn today, and then we can quickly start with the session. Okay, you can just check both the cameras once quickly. Sure. So yes, I think both the cameras are working fine. Okay, perfect. Okay. So hi everyone, this is your host Lodi here. Let me just put myself on spotlight. Otherwise, ऐसा लगेगा कि कौन बोल रहा है because ऐसी आवाज आ रही होगी. Just give me a second. I will quickly put myself on spotlight. So hi everyone, this is your host Lodi here, and I hope you are doing absolutely amazing. So आज का जो session है that is going to be a very interesting session. आज की जो हमारी session की trainer है that is Pankhuri. So since you can see Kamalpreet is here, that simply means that we are going to have a baking का session आज. और आज का baking का session बहुत ही special होने वाला है क्योंकि आज हम एक honey almond cake सीखने वाले हैं. And I am very excited for the session because मैंने कभी honey almond cake खाया नहीं है, but I've heard so much about it that I'm really excited कि आज मैं finally ये सीखने वाली हूँ. So I hope everybody else here is also excited. I'll quickly give you an introduction what basically we are going to learn today, and then we are quickly going to jump into the session itself. ठीक, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सबसे पहले सीखेंगे बेस बनाना, कि how do you make a proper base. Second हम जो हनी सिरप होता है वो बनाना सीखेंगे, and plus आप कैसे अपना जो केक है उसको प्रॉपर एक हनी आमंड हनी केक का लुक कैसे देते हो आज हम वो चीज सीखेंगे. तो आज एक कंप्लीट पैकेज है. आप बेस सीखोगे, उसका गार्निशिंग भी सीखोगे, प्लस उसका डेकोरेशन भी सीखोगे. सो आई होप एवरीबॉडी इज रियली एक्साइटेड फॉर द सेशन, एंड इफ यू ऑल आर just give me a thumbs up in the comment section and we will start with the session. And remember, everything that you need is already updated on the app. आप ऐप पे जाओगे तो आपको ऐप के ऊपर पीडीएफ मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. एंड रिमेंबर, आज का जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर नहीं रहेगी. The recordings are only going to be available on the Pankhuri app, and the link of the Pankhuri app is given in the description box. So go there and check it out. So आज का जो सेशन होगा उसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा. उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी. तो आप ऐप पे जाकर के रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, और ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. So yes, without wasting any time, let's get started with the session, and over to you, Kamalpreet. Thank you so much, Saloni, for the introduction. So yes, everybody know that today we are going to make almond honey cake, and this cake is made with whole wheat cake. So ये जो cake बनने वाला है आज whole wheat flour से बनने वाला है. So this is a healthy cake also. So let's begin if everything is good. Yes, I think everything is good and we can start with the session now. Sure. So first we are going to take a bowl and we are going to put our ingredients in that. The position is fine, Saloni? Kamalpreet, can we get it a little more towards the center? थोड़ा सा ना वो बाहर चला जा रहा है, आपकी तरफ लेंगे थोड़ा सा. Better? Yeah, okay. Okay. Okay, so first thing which we need is to set our temperature at 180 degrees Celsius and keep it for the preheating. So सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है, oven जो है अपना preheat पे set कर दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है
in which I'm going to take wheat flour. Okay. We need wheat flour, baking soda, baking powder, and sugar. Just give me 1 minute. Okay. तो शुगर मैं जो यूज कर रही हूँ यहाँ पे कैस्टर शुगर यूज कर रही हूँ, आप पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं. द शुगर विच आई एम यूजिंग हेयर इज कैस्टर शुगर. You can also take powder sugar. Saloni, I need just 1 second. Sorry. Yeah, sure. No issue. So here you can see अभी हम जो आज केक बनाने जा रहे हैं वो एक होल व्हीट केक बनाना है. होल व्हीट केक का मतलब होता है कि एक हेल्दी केक, यानी आप वो जो आटा होता है उसकी हेल्प से वो केक बनाते हो, तो ये बहुत ही हेल्दी केक होने वाला है. सो आई होप जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे उनको ये केक आज का बहुत ही अच्छा लगने वाला है. एंड यस, इसके लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें चाहिए होगा कैस्टर शुगर, या फिर अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं. You can go for the caster sugar, and if you do not have caster sugar, you can also go for the powder sugar. Juhi ma'am, you can find the measurements and the ingredient list in the Pankhuri app. Pankhuri app के ऊपर आपको ingredient list और पूरा measurements मिल जाएगा. There is a proper PDF uploaded there. You can just go there and check it out. You can find the link in the description box also. We will tell you the quantity also. Just give us a minute. हम आपको पूरी क्वांटिटी भी बताएंगे कि कितने में क्या होना चाहिए, तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए. we'll let you know that also. So till this is happening, everybody can let me know कि इससे पहले किसने किसने wheat flour से केक बनाया है. Yes, sure, Julie. You can see the PDF on the Pankhuri app that's already updated there. You can just go there and you'll find the complete recipe there. Yeah, I am so sorry. Can we start it? Yeah, but it's a little on the edge. Can you get it literally the same? Okay, yeah, I will do that. I will do that. Focus on left में जाएंगे. और थोड़ा सा. Just 1 second, let me check in the camera. Yes. Fine? Perfect. Yeah, perfect. So now we are going to take whole wheat flour. So this is 180 grams. Okay, we have whole wheat flour here, castor sugar here. In this, we are going to add baking soda and baking powder. Baking soda is 1/8 TSP and a pinch. And you all can see कि मैं जो भी measurements वगैरह हैं वो मैं comment section में लिखते हुए जा रही हूँ. You can just check in the comment section for the measurement portion. So we have taken caster sugar, or you can also take powder sugar here. That was 70 grams. Or if you're measuring it in cups, so it will be 1/4 cup plus 1 tablespoon.
Next, we took the whole wheat flour that was 180 grams. And if you want it in terms of cups, so it will be 1 cup plus 1/4 cup plus 1 tablespoon. तो हमने अभी तक कैस्टर शुगर और जो आटा होता है वो लिया है. कैस्टर शुगर 70 ग्राम्स है और जो आटा है वो 180 ग्राम्स है. आप कमेंट सेक्शन में देखते हुए जा सकते हैं. मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखते हुए जा रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए. तो जैसा कि सलोनी ने भी आपको बताया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ. इज माय कैमरा ऑफ? That camera, yes. It's Is it actually on not now? in the. No, it's not in the meeting actually. Okay. Just 1 second. Sure. So yes, everyone, we hope कि अब तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी. If there is anything that you feel कि नहीं समझ में आया है, please let us know. So yes, we are really sorry. बीच में थोड़ा सा आज नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है, इसी वजह से आज सेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था. But I hope कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. But don't worry. So till then, I hope everything that we have told you till now is absolutely clear. If there is any question that you have, please let us know. So अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें बताई हैं, I hope that is clear. Saloni, it is done. Can you check? Just a second. Yeah, sure. The camera is on, the other camera. Fine now? Yeah, sure. Yeah. Okay. Okay, so I think there would not be any other problem now. So I'll quickly give you a recap of this. In this, we have whole wheat flour, castor sugar, baking powder and baking soda. इस बोल में हमारे पास अभी तक है castor sugar, आटा, baking powder और baking soda. उसको एक stir दे दिया है हमने और इसको अभी हम side में रख देंगे. We have given it a stir and that we have kept it aside. So there is another bowl. Okay. So in this bowl, we are going to take curd. तो हमने अभी यहाँ पे एक और बोल लिया है. इस बोल में हम अभी कर्ड लेने वाले हैं. So it is 142 grams. Okay, baking powder. Okay, so जो ही baking powder जो था वो हमारा 3 ग्राम था या फिर आप बोल सकते हैं like 2 pinches of it. Amanpreet, आपका कैमरा ऑफ. It's again off. Yes. Yeah, fine now. Fine. Yes, yes. Okay, so we will start beating it a little till the time it's smooth. Okay. So next आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ yes you can take over. Also, don't worry, the curd that we have taken here is the market one, or it is the normal. Yeah, it's a market. You can take from market. You can take homemade curd. Any curd you can take, but it should be little thick. Okay.
तो यहाँ पे हम लोगों ने दही ले ली है। दही आप बाहर की भी ले सकते हो, घर की भी ले सकते हो। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो दही होगी वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। अगर आपकी घर की दही बहुत ज्यादा उसमें पानी है तो आप क्या कर सकते हो, किसी कपड़े में उसको रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, और उससे क्या होगा कि आपकी दही में जो भी पानी होगा वो हट जाएगा, देन वो एक थिक कर्ड की तरह काम करेगी, देन आप उसको यूज कर सकते हो। So I am adding honey here. And next we have to add is water. So we have added 60 grams of honey here, right? Yes, that's correct. So next हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है अपना हनी यानी कि शहद। शहद जो होगा वो या तो 60 ग्राम्स होगा या फिर आपका 3 टेबलस्पून आप शहद ले सकते हो। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पानी। पानी जनरली हम इसलिए ऐड करें ताकि आपकी कर्ड और आपका जो वो है हनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए अच्छे से इवनली मिक्स हो जाए एंड आपको एक सिरप जैसा वो मिले, कंसिस्टेंसी मिले। Next we are going to add milk and oil. नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मिल्क एंड ऑयल। मिल्क जो हमारा रहेगा वो अगेन हमारा मिल्क 45 ग्राम्स रहेगा या तो 3 टेबल स्पून, और जो आपका ऑयल होगा वो 60 ग्राम्स होगा या फिर 1 टेबल स्पून प्लस 1/4 कप। So I'm going to sift in the dry ingredients. I'm sorry for the movement of the camera. Just 1 second. Sure. So I'm just going to see all the dry ingredients. नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने साइड में अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि हम लोगों ने जो होल व्हीट फ्लावर और कैस्टर शुगर इन सबको मिक्स करके साइड में रखा था, हम वो अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं और उनको अच्छे से छानते हुए अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड करते जा रहे हैं। यस कोमल, एब्सोल्युटली राइट। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि द ऑयल दैट यू आर यूजिंग डज नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल टू इट। Yes, we are sieving the dry ingredients in the wet ingredients. Oh, sure. Just a sec. Milk was 45 grams or oil was 60 grams. I'm writing it all in the comment section. You can check. So we are going to mix the batter here, and if it's little tough, you can add a little bit amount of water or milk, a very little, because we need a thick batter. So next you can see हम यहाँ पर अपना जो पूरा मिक्सचर है उसको अच्छे से मिक्सअप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका जो बैटर होगा वो बहुत ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए, एक थिक बैटर होने चाहिए पूरी की पूरी रेसिपी के लिए। तो कभी जो हम जनरली केक बनाते हैं उनका जो बैटर होता है वो इससे थोड़ा सा थिन कंसिस्टेंसी का होता है। तो ये जो बैटर है वो all purpose flour का होता है, because we used all purpose flour in that and we are not using any all purpose flour in here. Okay. So there's a question here, Kamalji. Yes. That are we not going to use butter here? Butter? Yes. That we are going to use for the glaze, which we are going to pour on the top. Okay. So Komal is saying that it is like a tiffin recipe, ma'am.
Okay. So here you can see that I have a spring foam mold, which is very much mandatory for this cake. Otherwise, it is quite difficult to demold. So I'm going to apply some oil and line it with butter paper. ओके सो नेक्स्ट यू कैन सी हियर हम अपना जो बैटर है उसको कोट करने के लिए एक जो हमारा केक टिन होता है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे एक पैचमेंट पेपर लिया है, मतलब जो बेस होता है उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रीसिंग की है। उसके बाद हम उसके ऊपर पैचमेंट पेपर जो है उसको लगा दें एंड देन आप अपना जो टिन है उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। आप या तो स्प्रिंग फोम मोल्ड यूज करेंगे या कोई रिंग यूज करेंगे। आप नॉर्मल मोल्ड यूज करेंगे तो थोड़ा डीमोल्ड करना डिफिकल्ट है, जस्ट उस चीज का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी डीमोल्डिंग में प्रॉब्लम होती है। सो आप देख सकते हो मैं साइड्स में भी यहाँ ऑयल लगा रही हूँ। साइड्स में बटर पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट नीचे जरूरी होती है। तो नीचे बटर पेपर है, साइड में ऑयलिंग है। So on the bottom, you can see there is a butter paper, and on the sides, I have applied oil. And this is mandatory that you should use a spring foam mold or a ring for this cake. You can go for normal mold also, but it is quite difficult to demold from that. Just that's the issue why we are using spring foam mold here. So this batter is going in this, and this will go in a preheated oven at 180 degrees Celsius. सो नेक्स्ट यू कैन सी हम लोग ने अपना पूरा बैटर जो है हमारे केक टिन में डाल दिया है। इसके बाद हम उसको एक प्री हीटेड अवन में रखेंगे। जो आपका अवन होना चाहिए वो 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट आपको करना है एटलीस्ट 10 मिनट के लिए। यू हैव टू प्री हीट योर अवन फॉर 180 डिग्रीज for 10 minutes before putting your cake tin into it. So I have tapped it nicely. And this will go in the oven now. So temperature should be 180 degrees Celsius, upper rod on, lower rod on. If you have fan in your OTG, fan should also be on. ऊपर की रॉड ऑन होनी चाहिए, नीचे की रॉड ऑन होनी चाहिए। फैन है तो फैन भी ऑन रखिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। ओके Okay, so any questions till the time, then we will go for the glaze. So there's a question that ma'am, what is the size of the tin that you're using here? I am using 7 inches. Okay. There's a question that ma'am, but why are we using a whole wheat flour here instead of maida? Because I want to give you a healthy recipe. Can you please shift the camera? Yeah, sure. Just a second. No problem. I wanted to bring a healthy recipe in cakes. That's why we are making this with whole wheat flour. Okay. So yes, ladies, if you have any more questions, please let us know. So I have kept it in the oven and we will let it bake for approximately 15 to 20 minutes. Please shift the camera. We can move on to the glaze now. Sure. Yeah. Any questions if there are, then you can let me know till the time I am preparing for the glaze.
No, no. कोई भी Are there क्वेश्चन any है तो questions? आप टाइप कर सकते हो. No questions we have? Okay. No, no. So We do let's not have any questions prepare. right now. Sure, perfect. So let's prepare the glaze now. So for glaze, we need to take a pan, and in this pan, we are going to melt the butter first. So next we are going to start with the glazing part. So यहाँ पे हमने सबसे पहले उसके लिए butter लिया है. We have taken butter here because now we are finally going to start with the glazing part. So what is the amount of butter that we are taking here, Kamalpreet? Uh, Kamalpreet? Hey trainer, am I audible? I'm sorry. So in this, once this is melted, we are going to add sugar and honey to this. So, Kamalpreet, what's just like I guess. Yeah. Yeah. So I was saying, what is the amount of butter that we have taken here? Butter is 50 grams. Okay. So here you can see हम लोग ने यहाँ पे 50 grams butter लिया है. इसके बाद हम इसमें sugar और honey दोनों ही चीजें ऐड करेंगे. नहीं कंचना, हम लोग ने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही चीजें ऐड की थी. So I have added sugar here. And what is the amount of sugar that we have added here? Just 1 second. Sugar is 40 grams. Okay. And now we are adding honey, which is 30 grams. 30 grams. Yes. तो हमने पैन में पहले बटर डाला, बटर को मेल्ट किया, उसके बाद उसमें हमने शुगर ऐड करी. बटर था 50 ग्राम, शुगर थी 40 ग्राम, और अब हमने इसमें हनी ऐड किया है जो कि है 30 ग्राम. So you can see here हम लोगों ने सबसे पहले बटर लिया था 50 grams, उसके बाद हम लोगों ने उसमें ऐड किया है शुगर 40 grams, एंड लास्ट में हम लोगों ने ऐड किया है हनी दैट इज 30 grams. और इन सबको हम लोगों ने अच्छे से मेल्ट करके एक साथ मिक्स कर देना है. So trainer, there's a question here कि मैम ये जो हम ग्लेज बना रहे हैं ये कौन सा ग्लेज है? आलमंड हनी केक के लिए ऊपर ये हनी, दिस इज हनी आलमंड ग्लेज, जो बेसिकली इस केक का मेन कंपोनेंट है. This is the main component of the cake which is going to give you the flavor of honey and almond. So you can also add some almonds in the cake also. That is also fine.
तो आप चाहें तो आप जो केक का बैटर होता है उसमें भी थोड़े से आमंड्स ऐड कर सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे नहीं किए थे, आप कर सकते हैं। So in this, we are adding the cream now. Once everything is nicely combined, 20 grams of creams we have added here. So next you can see here, हम लोग ने सबसे लास्ट में इसमें फ्रेश क्रीम ऐड की है और ये जो क्रीम है ये अराउंड 20 grams है। In the last we have added cream here and the cream is around 20 grams. And lastly, I will add the almonds. And तो सबसे लास्ट यहाँ पे दो क्वांटिटी लिखी है almonds की। अगर आप chopped almonds डाल रहे हैं तो अराउंड 40 ग्राम डालेंगे और अगर होल डाल रहे हैं तो अराउंड 45 ग्राम डालेंगे। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इसमें ऐड किए हैं थोड़े से बादाम। बादाम अगर आप ऐसे कट करके डाल रहे हो तो आप 40 ग्राम्स यूज कर सकते हो, बट अगर आप ऐसे स्ट्रेट एकदम खड़े खड़े बादाम डाल रहे हो तो आप अराउंड 45 से 50 ग्राम्स बादाम यूज करिएगा। Because in whole the quantity decreases, in chopped the quantity increases. Yes, Santoshini, you sure can use the Amul cream. Yes, that is the same cream. I have also used Amul fresh cream. So once you can see everything is nicely emulsified, that means your glaze is ready. So I am putting some hole also to give you idea that how the hole will look. Okay. I like chopped more because hole you can see doesn't give you good color. You can see this. There is a piece of hole and this is chopped. So I prefer chopped, but you can use any of them. Or you can use sliced also. So you can see कि हमारा जो पूरा का पूरा हम ग्लेज बना रहे थे वो प्रॉपर्ली रेडी हो गया है। रेडी होने का मतलब आप देख सकते हो हर चीज एक दूसरे में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गई है। जो हमारा बैटर है वो हल्का सा थिक हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो पूरा आप ग्लेज बना रहे थे वो प्रॉपर्ली रेडी हो गया है। Okay, so now let's check the cake. Cake should be 80% ready. It should not be fully cooked. सो नेक्स्ट आपको देखना है कि आपका जो केक है वो फुल्ली कुक नहीं होना चाहिए। आपका केक अराउंड 80% कुक्ड होना चाहिए जब आप ये ग्लेज यूज करेंगे तब। So I'm going to take this out. This is around 80% done. Sure, Santoshni, I will quickly repeat that. So we have added 50 grams of butter, then we added 40 grams of sugar, 30 grams of honey. We incorporated them all together, and in the end, we added 20 grams of fresh cream. So, Kamalpreet, can you show us कि 80% जब केक कुक हुआ रहेगा, how is it looking? Yeah, I'm taking it out. Then we are going to pour the glaze over it. Give me one moment. Okay, sure. सो यस लेडीज, आई होप कि आप लोग को अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा कि क्या चीज कैसे यूज की गई है, कौन से मेजरमेंट में यूज की गई है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो। कोई भी अगर क्वेश्चन सवाल आपके रह गए हो तो प्लीज हमें बताइए। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसमें इजीली क्लियर आउट कर सकें।
Yes. Is it visible, Saloni? Yes, yes, it is visible. So at this stage, we are going to pour this glaze over it. So यहाँ नेक्स्ट आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे जो हम लोग ने ग्लेज बनाया था वो हम इसके ऊपर पोर कर दे रहे हैं. हमारा केक अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ है. अराउंड 80% ये कुक हो चुका है, 20% अभी नहीं हुआ है. तो ये परफेक्ट स्टेज होती है जब आपको ये ग्लेज ऐड करना है, ताकि ये ग्लेज का जो प्रॉपर फ्लेवर्स हैं वो आपके केक में इनकॉर्पोरेट हो जाएं एंड आपको आमंड और हनी का फ्लेवर प्रॉपरली आ सके आपके केक में. इसलिए इस स्टेज पे आपको ये ग्लेज ऐड करनी होती है. Oh, okay, So I am Santoshi. showing. I am trying to give you effect of both the chopped and the whole. So you can choose which effect you like. So on this side, you can see that it is whole, and on this side, you can see the chopped. So whatever you feel good for you, whichever you like with your eyes, you can choose that. Or there is other option also, which is sliced. So you can go for any options. Or you can mix all three. Like I have mixed two here, so all three you can mix. So I'm adding some more. तो आप चूज कर सकते हैं आपको कैसे डालने हैं, नहीं तो आप तीनों मिक्स करके भी थोड़े थोड़े डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है देखने में. So this is going back in the oven till the time it's completely cooked. So next you can see कि हम लोग ने यहाँ पे जो ग्लेज है उसको अपने पूरे केक के ऊपर डाल दिया है. आप चाहें तो जिसमें हम लोग ने यहाँ पे जो आमंड्स डाले हैं आप उसको ऐसे छोटे छोटे से काट के भी डाल सकते हैं, 2 पार्ट्स में से स्लाइस करके डाल सकते हैं, या फिर आप कंप्लीटली ऐसे फुल आमंड्स को भी डाल सकते हैं. जो भी आपको देखने में अच्छा लगता है आप उस फॉर्मेट में कर सकते हैं, या फिर आप सबको ऐसे मिक्स करके एंड देन उसके बाद भी डाल सकते हैं. ये बिल्कुल आपके ऊपर एंड आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. Oh, that's so great, Kamal. Komal. We are really, really happy कि आपको हमारी क्लासेस में इतना हेल्प किया है, and we are so happy कि आप finally orders दे रहे हो. That's absolutely amazing. Santoshi, I will really request you to please check out the recordings that are updated on the Pankhuri app. अभी रात में 9 बजे तक recordings update हो जाएंगी आपके ऊपर. Then you can go there and you can check out the recordings itself. You will also find the PDF there with all the ingredients and measurements, just in order to make the things little easy for you. Okay, so we are done here. So if we have any questions, we are going to bake this till the time it's properly cooked. And then there are some further steps, which is that you have to keep it in the fridge for some time. Once it is done, what you will do, you will let it cool down. Once it is cooled down, you will keep it in the fridge to set. You will remove it from the tin, and again you will keep it for some time to set in the fridge. Why? Because this is a whole wheat cake. It takes time to set, and even the glaze on top, that takes time to set, which fridge helps in. So अब हम क्या करने वाले हैं, जब ये बेक हो जाएगा इसको निकालेंगे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे. ठंडा होने के बाद एज इट इज टिन के साथ हम इसको अंदर रख देंगे फ्रिज में अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने देंगे. डीमोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि पूरा परफेक्टली सेट हो जाए. होल व्हीट केक है, प्लस ऊपर जो ग्लेज है उसको टाइम लगता है सेट होने में, जो फ्रिज हमारी हेल्प करता है. आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर. Yes, it is. Okay, so yes, we do have few questions here, Kamal, please. Yes. So there's a question that, ma'am, what is the basic difference between a tea cake and a normal cake, and also between a brownie and a chocolate cake? Okay. So first thing, the difference between a tea cake and a normal cake. So tea cake is basically little dense, and it is
brown on the edges, whereas a sponge is soft, light, fluffy, and it is not very much darker in color, crusty from outside. The tea cake is little crusty from the outside. Okay. A second difference that we don't frost this cake and the other cakes are frosted, decorated. The sponge is frosted, decorated to make it in a shape of a cake. Okay, so these are two major differences between a tea cake and a normal cake, which is iced. So between a chocolate cake and a brownie, see again the same difference. A chocolate cake, a sponge is light and brownie is little dense. Brownie is fudgy, made of mostly chocolate, melted chocolate, whereas the chocolate cake is made with cocoa powder. So that is the difference. Same in brownie, you have nuts in it, and in cake, it is gonna be iced. So these are the two major difference between brownie and a chocolate cake. I hope this is clear. Yes, I think it is absolutely clear. So there's a question here that ma'am, क्या हम ये सेम केक को माइक्रोवेव में भी कुक कर सकते हैं? माइक्रोवेव में होल व्हीट फ्लावर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो आप गैस पे इसको कर सकते हैं. फॉर माइक्रोवेव आई वोंट सजेस्ट दिस रेसिपी. आई हैव ट्राइड बट नॉट अ वेरी गुड सक्सेस बिकॉज द टेम्परेचर डजंट रिएक्ट गुड विद होल व्हीट फ्लावर. सो यू कैन नाइसली बेक इट ऑन अ गैस. Gas works perfectly fine for this cake. And when we are working on gas, how are we supposed to put the setup? So you need to take a kadhai or a cooker. Just 1 second. Yeah. So you need to take a kadhai or a cooker, and in that you need to keep a wire rack. Wire rack is basically that round wire stand on which we used to keep hot cookers or kadhai. I hope everybody is understanding that. So Yes, that yes. wire stand you will keep, or if you don't have a wire stand, you will use a bowl, a steel bowl or steel katori. The main purpose here is to maintain a distance between the cooker or the kadhai surface, which is this, for example, and the tin which your cake batter have, which you are about to keep in the kadhai. जिसमें आपका केक बैटर है और जो आपकी कढ़ाई या कुकर की सरफेस है और ये आपका सपोज कर लो केक टिन है, इन दोनों के बीच में स्पेस होनी चाहिए. वी नीड स्पेस बिटवीन देम. फॉर दैट आइदर यू विल यूज अ वायर स्टैंड और यू विल यूज अ स्टील कटोरी. ओके, एंड you will put a lid on it so that it is closed and no space to release air. उसके ऊपर आप प्लेट रखोगे या कोई लिड रखोगे ताकि एयर जो है बीच में जो हीटिंग है वो कहीं से एस्केप ना हो, कहीं से निकले ना. ओके, एंड यू विल लेट इट प्री हीट फॉर 10 मिनट्स. उसको पहले आप बिल्कुल लो फ्लेम पे, ऑन लो फ्लेम, लोएस्ट फ्लेम ऑफ योर बर्नर, यू विल प्री हीट दैट एंड यू विल प्री हीट इट फॉर 10 मिनट्स. आप उसको गर्म होने देंगे और 10 मिनट के लिए आप उसको खाली गर्म होने देंगे. प्री हीट होगा वो हमारा. उसके बाद आप उसमें प्रिपेयर्ड केक टिन रखेंगे और लिड लगा के या प्लेट से जिस तरीके से भी आप उसको कवर कर रहे हैं, या कुकर के ढक्कन से. कुकर अगर यूज कर रहे हैं तो उसको बंद नहीं करना, सिर्फ ऊपर रखना है ताकि वो बंद हो जाए. क्लोज नहीं करना, स्टीम नहीं बनानी हमें. Okay, if you're using cooker, you don't have to lock it, just keep it. We don't want the steam to generate inside. Okay, otherwise the cooker will burst. So whatever you're using, put the cake tin, cover it with a lid, plate or the cooker lid, and let it cook on the low flame only. उसको आप बंद कीजिए केक टिन रखने के बाद और उसको लो फ्लेम पे ही बेक होने दीजिए. सेम वे से आप चेक करेंगे, ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है ओटीजी और गैस में. द सेम टाइम वर्क्स फॉर ओटीजी एंड गैस. Any doubts for gas method or OTG method or anything else, you can ask me. So yes ladies, I hope आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे गैस पे या फिर ओटीजी में बना सकते हैं. अगर कोई भी डाउट है अभी भी तो प्लीज लेट अस नो, वी विल हेल्प यू आउट विद दैट. ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन हियर दैट मैम, क्या हम इस केक को भी इस केक पर भी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं?
इस केक पर आप फ्रॉस्टिंग कर सकते हो, बट पूरा प्रॉपर सेट होना चाहिए। और बट होल व्हीट केक है, होल व्हीट केक में क्रम्स बहुत ज्यादा आते हैं, सो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट यू कैन, बट विदाउट द ग्लेज। आप फ्रॉस्ट कर सकते हो, बट एक ड्रॉबैक है कि होल व्हीट केक में क्रम्स बहुत ज्यादा आते हैं, सेट होने में टाइम लगता है सेकेंड। और अगर आप यूज करना चाहते हो तो बिना ग्लेज के यूज करोगे। जो हमने पहले बैटर डाल के करा था ना 80% कुक, वहीं तक आप रखोगे, ग्लेज नहीं बनाओगे। So remember, ladies, if you want to do the frosting on this type of cake, you sure can. But remember, there are going to be a lot of crumbs. So if you're fine with the crumb part, you sure can. And also, if you're doing the frosting, do not use glue. Okay? You can just go straight towards the frosting part once the cake is cooked. So just another 5 minutes and it would be done. Yeah, if we have any other questions till the time. Okay. DJen, as Kamalpreet just told us, that the timing and temperature is going to be same in OTG and in cooker. So you're going to preheat it for 10 minutes. If you're baking it in OTG, then it is going to be 180 degrees for 10 minutes of preheating. And if you're and then you're going to bake it for around 15 to 20 minutes. And if you're baking it on gas, then it is going to be 10 minutes of preheating at low flame, and you're going to bake it for again 15 to 20 minutes. Kamalpreet, your camera is off here. Just a sec. I've replaced it with the other camera. Yeah, anything for me, Saloni? No. We do not have any questions right now. Let me just check once again. Okay. So yes, ladies, if you have any more questions, please feel free to let us know about it. Temperature is going to be 180 degrees DGen, 180 degrees in OTG, and अगर आप गैस से bake कर रहे हो तो the gas is going to be at low flame. Yes, for both. Look, whenever you're preheating at whatever temperature you will preheat, you're supposed to bake your cake on the same temperature. कभी भी preheating और baking का temperature अलग नहीं होता है. So you can see that this is done straight out of the oven. Can you please shift the spotlight? Yeah, sure. Just a sec. Yeah, done. This you can see straight out of the oven, and you can see it's nicely done. You can take a toothpick test. So toothpick is nice and clean. That means the cake is done. But we need to give it time so that the glaze settle properly. Okay, हम इसको time देंगे ताकि glaze properly set हो जाए. Okay. So this is the complete cake, and I have already told you the refrigeration part. You can refrigerate it and you can enjoy it after minimum 3 hours. Like 2 refrigeration you have to give, 1.5 hour and 1.5 hour minimum. Okay. So do you want me to demold it right now, or you want me to send pictures later on? What is more convenient? You want to see the final look, or you want me to cut it right now? I think अभी थोड़ा सा glaze flow करेगा, so whatever participants I want. think we can send the pictures in the group later on, क्योंकि अभी अगर हम demold करेंगे तो वो पूरा glaze ऐसे नीचे की तरफ drip होने लगेगा. Glaze भी गिरेगा, and obviously it is hot, so the cake would also be little difficult to demold. So अभी कैसा लग रहा है आपको? How the top look is looking? I am really liking it. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ग्लेज ऐसे ही आपका प्रॉपर सेट हो जाएगा, जैसा अभी आपको लग रहा है, दिख रहा है कि सेटल्ड है एक जगह पे. जब आप डीमोल्ड करोगे ऐसे ही सेटल मिलेगा आपको. और स्लाइस की मैं आपको पिक्चर भेजूंगी कट करके. ओके, तो ऐसा ही मिलेगा आपको. So how does this look?
So yes, ladies, let us know कि आपको कैसा लग रहा है ये जो केक अभी यहाँ पे कमलप्रीत ने बनाया है. एंड एक बार हमारा रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम आपको पिक्चर्स भी भेज देंगे ग्रुप में जो ऐप के ऊपर है. आप वहां पे जाकर के बिल्कुल चेक कर सकते हो. ओके. Otherwise, you can check my profile also. I will also upload it on my profile. यस. सो आप कमलप्रीत की प्रोफाइल पे पंखुरी ऐप पे भी चेक कर सकते हो. और अगर आप लोग ये केक बनाओगे तो प्लीज कमलप्रीत को जरूर टैग करिएगा. अगर आप सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट कर रहे हैं तो कमलप्रीत को टैग करिएगा, आज पंखुरी को टैग करिएगा और हमें प्लीज ग्रुप में जरूर भेजिएगा बिकॉज वी रियली लव टू सी ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू ऑल मेक. सो यस. And also Kamalpreet, everybody here really loves you. Especially there is Deepika Jain. She's saying that she has learned so many things from you, and you are Thank you so super much. I recall her name. awesome. And the other one is? One was Deepika Jain, and there was one more person. She learned from you, I think, in basic to advanced class, and now she's Okay, baking, okay. she's taking orders also. So she was very happy. Thank you so much. I'm so glad. These things make me happy, really. तो Yes. अब बहुत टाइम से आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आपको कुछ हेल्दी चाहिए, कुछ होल व्हीट में चाहिए. तो स्पेशली मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ होल व्हीट में. विदाउट ग्लेज आप इसको फ्रॉस्ट भी कर सकते हैं. थोड़ा सा क्रम आएगा, बट यू नो if you have taken my basic to advanced classes or other classes, you know how to handle the crumb, so there is no issue in that. So this is the complete look, and it's really making me hungry. So इसको पहले मैं सेट होने दूंगी, आप लोगों को स्लाइस के पिक्चर भेजूंगी, and then I will enjoy it, and I want you to do the same कि आप बनाओ, सेट करो और enjoy करो. बट खाने से पहले पिक्चर जरूर भेजना प्लीज. Yes, everyone, please make these cakes और उन सब की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करिए बिकॉज हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब आप पिक्चर्स शेयर करते हो. एंड यस, पॉप्सिकल्स का भी क्लास जल्दी ही आने वाला है. आई थिंक नेक्स्ट वीक ही वी हैव पॉप्सिकल का क्लास. राइट, ऑन 1st May. या 1st of May, करेक्ट. सो 1st of May को हमारा पॉप्सिकल का भी क्लास है जो कि कमलप्रीत ही लेंगी एंड दैट इज ऑल्सो अ यूट्यूब लाइव. सो आप हमें वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू फॉर द पॉप्सिकल क्लास ऑल्सो. Yes, So for yes, sure. Kamalpreet, thank you so much. It was absolutely an amazing and stunning class like always. Thank So you so much. and thank you everyone for joining us today. I hope that you all really liked and loved the session. If you did, please go on Google Play Store and rate us and review us. Do like the session and please subscribe to the YouTube channel because we come live Yes. twice a week with lot of fun sessions and lot of fun activities. So please do that and please show us your support because that is all that makes us happy. So thank you, Kamalpreet. It was a great session with you. Thank you so much. And if you have any questions or any query later on, I will be there in the course group. You can type in there and we will be happy to help you. Yes. So thank you, Kamalpreet, and thank you everyone for joining us today. And do not forget to subscribe because that is something really important for us. So I hope to see Yes. you all in the next session. Till then, bye bye, take care, and have a great day, guys. Bye. Thank you. Bye.